Hello, my dear students. Jai Swaminarayan. This is our part 4 of our chapter number 2 is the sexual reproduction in flowering plants. So, in previous lecture, we have discussed about the pistil, megasporangium, it meaning ovule, and we have talked about embryo sac. Okay, we have seen the structure, okay, the embryo sac and ovule, okay, in detail. So, in today's lecture, we are going to study about pollinations. The most important part of the reproduction is pollination. Now guys, this is basic funda. Now two gametes are formed. Now pollination is have to occur for the fertilization. Okay, now what is pollination? So the male and female gametes in flowering plants are produced in the pollen grain and embryo sac respectively, meaning the male gamete is called as pollen grain and female gamete is called as embryo sac. Now male and female are ready to reproduce. Okay, now is another step is as both types of gametes are non-motile. Okay, keep in mind that these all two gametes, male and female gametes, are non-motile. Okay, non-motile meaning they cannot move from one side to another side. They have to be brought together for the fertilization. Okay, they are non-motile but they have to ब्रॉट टुगेदर. ओके, उनको साथ में आना पड़ेगा फर्टिलाइजेशन के लिए, मेल एंड फीमेल को कंबाइन होना पड़ेगा. बट हाउ इज दिस अचीव्ड? ओके, हम इसको कैसे करेंगे? हमको नहीं करना है, नेचर को करना है. कुदरत कैसे इसको करेगी? सो पॉलिनेशन इज द मैकेनिज्म टू अचीव दिस ऑब्जेक्ट. ओके, नाउ पॉलिनेशन इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ रिप्रोडक्शन प्रोसेस इन फ्लावर्स. नाउ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स shed from the anther to the stigma of the pistil is termed as pollination. Okay guys, here is the definition of pollination. So pollination is the transfer of pollen grain meaning male gametes to the stigma of pistil meaning female part. Okay, अभी pollen को female के पास पहुंचना है. Now this is called as pollination. Now flowering plants have to evolve an amazing array of adaptation to achieve this pollination. Okay, because the nature have provided the adaptations. Okay, adaptation meaning I have already talked about adaptation. Adaptations meaning उसको हैबिट हो जाती है पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के साथ. तो फ्लावरिंग प्लांट्स को ऐसी हैबिट हो जाती है कि वो कोई भी सिचुएशन में रह सकते हैं. सो द नेचर हैज़ प्रोवाइडेड द अमेजिंग एरे ऑफ दिस एडेप्टेशन to achieve this pollination process. Now they make the use of external agents. Now here this is important term, external agents to achieve the pollination. Now we will talk about this all external agents used in the pollination. Now can you list the possible external agents? अगर आपने कहीं पर देखा हो तो please provide the list of external agents. Now here is the another important topic is kind of pollination. Kinds of pollination meaning types of pollination. Okay, pollination किस किस तरह से होते हैं we will discuss. Now depending on the source of pollen, pollination can be divided into the three main types. Okay guys, here three main types. Okay, we will study and this is based on the source of pollen. pollen कहाँ से आ रही है, कैसे आ रही है, उसके हिसाब से pollination के three types है. First is autogamy. Autogamy. In this type pollination is achieved within the same flower. Okay, एक ही फ्लावर में pollination होगा, मतलब कि मेल एंड फीमेल जो पार्ट है फ्लावर का वो एक ही फ्लावर में है. ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर मीनिंग मेल टू द स्टिग्मा मीनिंग द फीमेल ऑफ द सेम फ्लावर. In the normal flower which opens and exposes the anthers and the stigma, complete autogamy is rather rare. Okay, complete autogamy is rare because we will discuss. Okay guys, so here you will see the picture of self pollinated flowers. Okay, male and female are in same flower or in same plant, so this is called as autogamy, but it is rare. Okay, in a normal flower opens and exposes the anther is rare. Why rare? We will see. So autogamy in such flowers requires the synchrony in the pollen release and stigma receptivity, and also the anthers and stigma should lie close to each other so that self pollination can occur. Okay, now these are the requirements
of cell pollination can occur. So what are the basic requirements? So synchrony meaning connection between pollen releases and stigma receptivity. Receptivity meaning स्टिग्मा लेने के लिए तैयार है, रिसीव करने के लिए रेडी है. सो स्टिग्मा को रेडी होना पड़ेगा और पोलन को रिलीज के लिए रेडी होना पड़ेगा. दिस इज कॉल्ड एज सिंक्रोनी. सो इसको दिस इज रिक्वायरमेंट, बेसिक रिक्वायरमेंट. एंड द एंथर एंड स्टिग्मा शुड बी लाई क्लोज टू ईच अदर. वो दोनों नज़दीक होने चाहिए एक दूसरे के. ओके, सो क्लोज टुगेदर, close to each other, so that cell pollination can occur. So these are the basic requirements. Now some plants such as viola, common called as pansy. Now this flower and another oxalis and the camelina. So these flowers produce the two types of flowers. Okay, these are autogamy, but they produce two types of flowers, mainly chasmogamous. Okay, now what do you mean by chasmogamous? So chasmogamous are the flowers which are similar to flowers of other species with exposed anther and stigma. Meaning exposed meaning here anthers and stigma are open, okay, ready to accept. So here open. And the clistogamous flowers are which do not open at all. Okay, these are two types. Okay, particularly these flowers, viola, oxalis and camelina. So these three flowers can be they produce the flower of two types, mainly chasmogamous and clistogamous. Okay, so chasmogamous meaning open, okay, fully opened anther and stigma. Now in clistogamous, flower which do not open at all. Okay, we will see in figure. Now you can see here clistogamous flowers. So guys, here you can see these are the flowers, clistogamous flowers. So here anther and stigma are closed, not open at all. Okay, here you can see. And this is the chasmogamous flower, this is open, you can see here. Okay, so this is the difference. Now in such flowers, the anthers and stigma lie close to each other. When anthers is in the flower buds, pollen grain come in the contact with the stigma to effect the pollination. Okay, as we know, anther has to reach on the stigma, okay, land on stigma to affect the pollination. Thus clistogamous flowers are invariably autogamous. Okay, clistogamous क्या है, autogamous ही है, as there is no chance of cross pollen landing on the stigma. यहाँ पर दूसरा कोई चांस है नहीं कि दूसरे किसी फ्लावर की पोलन यहाँ पर आए. Okay, so that's why they are called as autogamous. Clistogamous flowers produce assured seed set even in the absence of pollinators. यहाँ pollinators की भी कोई requirement नहीं है. That's why here is the absence of pollinators, and they produce the assured seed set. Seed set meaning the another further development of flower. Okay, now our another type of pollination is geitonogamy. Now transfer of pollen grain from the anther to the stigma of another flower. Here is the flower is different, but the plant is same. One plant, two different flowers. Okay, another flowers. Now although geitonogamy is functionally cross pollination, we can say the cross pollination because same flower में ये दोनों नहीं है, anther and stigma, different flowers are there, but plant is same, so that's why called as geitonogamy. And this is a type of self pollination involving a pollinating agent. Genetically it is similar to autogamy. Okay, genetically ये same है. Genetically meaning the hereditary material. Okay, the genetic material, we can say DNA, RNA. So it is similar in those chemistry, but autogamy, since the pollen grains come from the same plant. Why? Because the same plant is here. Plant is one, but flower are different. So the genetically similar. Now our third type of pollination is genogamy. Now we will see. Now transfer of pollen grains from the anther to the stigma of a different plant. Here guys, genogamy meaning the plants are different, two plants, okay, but same species. Now this is the only type of pollination which during the pollination brings the genetically different. Okay, here genetically different meaning they are not similar in genetic material, so they are different because species is also different. Okay, so transfer of pollen grain from the anther to the stigma of a different plant. We will see in figure 2.9b. Here you can see the figure.
cross pollinated flowers. Okay, this one flower, but the another flower is in another plant and they will reproduce. Now this is the only type of pollination which during the pollination bring the genetically different. This is easy now, okay, because we know another two types. Okay, so that's why the genogamy is different in genetically. So okay, now the agents of pollination, these are the very important, because agents require, why agents require? Due to cross pollination, different plants are there. Okay, that's why the pollination agents are required. Okay, so now plants uses the two abiotic and one biotic agents to achieve the pollination. Okay, two abiotic, keep in mind two abiotic meaning they are not living. So wind and water, wind and water are the two abiotic agents of pollination. Agents meaning वो पॉलिनेशन करवाएंगे. एजेंट का काम क्या होता है? कुछ करवाना. तो यहाँ पर पॉलिनेशन करवाएंगे एजेंट्स. सो प्लांट यूज द विंड एंड वाटर, ओके, एज अ एबायोटिक एंड एनिमल्स एज अ बायोटिक. एनिमल्स आर लिविंग, ओके, सो प्लांट्स विल यूज द एनिमल्स फॉर देयर रिप्रोडक्शन प्रोसेस, फॉर देयर पॉलिनेशन प्रोसेस. नाउ मेजोरिटी ऑफ प्लांट्स यूज द बायोटिक एजेंट्स. सबसे ज़्यादा क्या यूज होता है? बायोटिक एजेंट्स. ओनली अ स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ अ प्लांट यूज द एबायोटिक. कुछ ही स्पीसीज ऐसी है जो एबायोटिक एजेंट्स का इस्तेमाल करती हैं. pollen grains coming in the contact with the stigma is a chance factor here in both wind and water pollination. Wind and water pollination में क्या होगा? is a this contact between the male and female gamete is a chance. okay, होगा तो हो भी जाएगा, नहीं हुआ तो नहीं भी होगा. चांस फैक्टर है यहाँ पर. जरूरी नहीं है कि एवरी टाइम दिस कैन हैपन. ओके, नाउ टू कंपेंसेट दिस uncertainties and associated loss of pollen grains, the flower produce the enormous amount of pollen when compared to the number of ovules available for pollination. Okay, this is simple फंडा. okay, जरूरी नहीं है कि एवरी पोलन ग्रेन है वो कंप्लीट स्टिग्मा में जाएगी एंड ओव्यूल के साथ रिप्रोड्यूस करेगी, ऐसा जरूरी नहीं है. डेट्स वाई टू कंपेंसेट फॉर दिस अनसर्टेनिटी एंड एसोसिएटेड लॉस ऑफ पोलन ग्रेन्स, हियर pollen grain will be lost. Okay, so the flower has to produce enormous meaning lots of pollen. It has to produce lots of pollen because there are loss of pollen grains is that can be occur because of these uncertainties. That's why the pollen grains are produced in the thousand of numbers with comparating to ovules. Ovules can be smaller in number because ovule तो वहीं पर है, pollen को ही उसके पास जाना है. That's why ovule तो complete होगा, लेकिन पोलन को उसके पास जाने से वो जरूरी नहीं है कि हर एक पोलन उसको मिले. डेट्स वाई द पोलन ग्रेन्स आर नंबर ऑफ. नाउ यू कैन सी हियर दिस आर द एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन एंड दिस इज द बायोटिक. ओके, बिकॉज वाई बायोटिक? बिकॉज हियर जो पॉलिनेशन हो रहा है वो एनिमल के थ्रू होता है, इंसेक्ट के थ्रू हो रहा है. डेट्स वाई दिस इज द टाइप. नाउ पॉलिनेशन बाय वाइंड इज द मोर कॉमन अमंगस्ट द एबायोटिक पॉलिनेशंस. ओके, अगर एबायोटिक की बात करें तो वाइंड इज द मोस्ट कॉमन है, वाइंड से ही होता है ज़्यादातर. वाइंड पॉलिनेशन ऑल्सो रिक्वायर्स दैट द पोलन ग्रेन्स आर लाइट. ओके, यहाँ पर बेसिक रिक्वायरमेंट्स होंगी बिकॉज द पोलन ग्रेन विल बी लाइट एंड नॉन स्टिकी सो दैट दे कैन बी ट्रांसपोर्टेड इन द वाइंड करंट. ओके, वाइंड से पोलन को ले जाने के लिए what will be the requirement? So light meaning what do you mean by light? So here the light meaning the weight of pollen should be lighter in weight and non-sticky material will be there. That's why this is the easy process of pollination. They often possess well exposed stamens so that the pollen are easily dispersed into the wind current. Figure 2.10 we will see, and the large often feathery stigma to the easily trap airborne pollen grains. Okay, so what is the meaning of these lines? So they often possess well exposed stamens. Stamens कैसी होंगी? well exposed होगी. okay, ready होंगी pollen को लेने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए. okay, so that's why the pollen are easily, वहाँ पर pollen easily बैठ सके, disperse हो सके. एंड लार्ज ओपन फीदी स्टिग्मा. ओके, स्टिग्मा का जो नेचर है वो कैसा होगा? फीदर ही होगा. सो इजीली जो पोलन है वो ट्रैप हो जाए इसके अंदर. सो हियर 2.10 फिगर इज अ वाइन पोलिनेटेड प्लांट शोइंग द कॉम्पैक्ट इन्फ्लोरेसेंस एंड वेल एक्सपोज्ड स्टेमेंस. ओके, हियर यू कैन सी
द स्टेमेंस, वेल एक्सपोज स्टेमेंस। ओके, दिस इज द एडेप्टेशन, ये जरूरी है इसलिए नेचर ने ऐसा बनाया है इसको। नाउ वाइंड पोलिनेटेड फ्लावर्स ऑफन हैव अ सिंगल ओव्यूल इन ईच ओवरी एंड न्यूमेरस फ्लावर्स पैक्ड इनटू इनफ्लोरेसेंस। नाउ अ फेमिलियर एग्जांपल इज द कॉर्न कब। ओके, कॉर्न कब का आपने एग्जांपल देखा होगा। सो हियर इज द सिंगल ओव्यूल बट and each ovary and the numerous flowers are there packed into the inflorescence. The tassel you see are nothing but the stigma and style which wave in the wind to trap the pollen grains. Okay, वो winds में ऐसी हिलती रहती है, ठीक है, कौन कब आपने देखा होगा। So वो why they wave in the wind? Because to trap the pollen grain, pollen grain को लेने के लिए, अगर pollen grain आसपास के एटमोस्फियर में है तो उसको लेने के लिए वो ऐसा करती है। And this is the case in wind pollinated flowers. Okay, so wind pollination is the quite common in grasses. Okay, grasses की जो फैमिली है उसमें wind pollination mostly occur होता है। Now pollination by water. Okay, now wind is over, now we will talk about water. So pollination by water is quite rare in flowering plants and is the limited about the 30 genera. Okay, 30 genera are there, they are using the water as the pollination and mostly the monocotyledons. Okay, as you know what is monocotyledons. Okay, so this is the class of these flowering plants. Okay, now as against this you would recall that water is the regular mode of the transport for the male gametes among the lower plants such as algae, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स। ओके, हमने ये सब प्लांट्स के किंगडम देखे हैं, algae, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स। सो दे आर कॉल्ड एज लोअर प्लांट्स एंड लोअर जो प्लांट्स है उसमें ये वाटर रेगुलर मोड है, उसमें तो होता ही है एंड होना जरूरी भी है, बट इट इज़ बिलीव्ड particularly for the some bryophytes and pteridophytes that there is the distribution, their distribution is limited because of the need of water for the transport of male gametes. Okay, so यहाँ पर regular mode water है, that's why the distribution is limited. Okay, वो जहाँ पर ज़्यादा पानी मिलेगा वहीं पर वो reproduce कर पाएंगे, that's why the distribution is limited. Now they need water, that's why the distribution is limited. Now some example of water pollinated plants are the Vallisneria hydrilla which grow in the fresh water and several marine sea grasses such as Zostera. So here guys you can see the picture of Vallisneria. This is Vallisneria, this is hydrilla. Okay, so they are the example of water pollinated plant and they are the fresh water growing plants. नाउ नॉट ऑल एक्वेटिक प्लांट्स यूज द वाटर फॉर द पॉलिनेशन। जरूरी नहीं है कि सभी पानी में रहने वाले प्लांट्स है वो पानी का ही इस्तेमाल करते हैं पॉलिनेशन के लिए। इन द मेजोरिटी ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स सच एज वाटर हाइसिंथ, वाटर लिली, द फ्लावर्स इमर्ज अबव द लेवल ऑफ द वाटर एंड आर पॉलिनेटेड बाय द इंसेक्ट और वाइंड। ओके, ये दिस आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। ओके, इंसेक्ट मीनिंग एनिमल्स एंड वाइंड। सो ज़रूरी नहीं है कि वाटर के रहने वाले प्लांट्स वाटर का ही इस्तेमाल करें, वो क्या करेंगे, वो थोड़े ऊपर हाइट, उनकी हाइट थोड़ी बढ़ेगी, पानी की सरफेस के ऊपर आएंगी एंड डेट्स वाई द वाटर इज़ नॉट देयर बट इंसेक्ट एंड वाइंड विल बी देयर। सो इंसेक्ट और वाइंड एज इन द मोस्ट द लैंड प्लांट्स, लैंड प्लांट्स में जैसे इंसेक्ट एंड वाइंड इस्तेमाल होते हैं वैसे ही इनके एक्वेटिक प्लांट्स में भी यूज़ होंगे। नाउ इन Vallisneria, here the female flower reach the surface of water by the long stalk and the male flower or pollen grain are released on the to the surface of water. Here Vallisneria में क्या होगा, the female flower reach the surface of water, okay, by their long stalk and male flower can be reached there. Now they are carried passively by the water currents. वाटर में जैसे वाटर पानी की जो लहरें होती है वाटर करंट्स। ओके, सो दे आर कैरिड पैसिवली बाय द वाटर करंट्स. Some of them eventually reach the female flower and the stigma. Okay, some of them, here is the this is important, some of them can be reach the female flowers and the stigma. In another group of water pollinated plants such as sea grasses, so in this female flowers remain the submerged in the water and the pollen grains are released inside the water. Okay, because the female flowers remain in the water, वो पानी में डूबे हुए होंगे, डेट्स वाई द पोलन ग्रेन को भी पानी के अंदर जाना पड़ेगा. ओके, रिलीज इनसाइड द वाटर. ओके,
Now, pollen grains in many such species are long, ribbon-like, and they are carried passively inside the water. Okay, जैसे पानी के अंदर डूबी हुई जो है फीमेल, so उनकी pollen grain भी different होगी. Okay, you can see here the amazing nature. So the pollen are long, ribbon-like, and they are carried passively inside the water. Some of them reach the stigma and achieve the pollination. Okay, our final goal is to achieve pollination. In most of the water pollinated species, pollen grains are protected from the wetting. Okay, यहाँ पर pollen को पानी में ही रहना है, that's why वो waterproof होनी चाहिए. Okay, that's why they are protected from the wetting by a mucilaginous covering. Okay, here mucilaginous covering meaning waterproof material of nature. You can see both wind and water pollinated flower are not very colorful and do not produce nectar. Why? What would be the reason for this? Okay, वाइंड से एंड वाटर से जो पॉलिनेशन होता है वो फ्लावर्स कलरफुल नहीं होते हैं. वाई? यू कैन थिंक. ओके, आई विल टेल यू. कलरफुल, वाई फ्लावर्स आर कलरफुल? to attract the insects, to attract the agents of pollination. But here in this case by water and wind there is no requirement to attract them, because वो तो आएंगे ही आएंगे. वाइंड एंड वाटर बायोटिक नेचर नहीं है, वो एबायोटिक है. उनको फ्लावर कलरफुल हो या ना हो क्या फ़र्क पड़ता है. फ्लावर का कलरफुल होना वहाँ पर ज़रूरी है जहाँ पर उसको अट्रैक्ट करना है. किसी को अट्रैक्शन में आने के लिए हम किसी के सामने अगर अट्रैक्शन में आना चाहे तो हम भी कलरफुल अच्छे अच्छे कपड़े पहनेंगे, हम भी सज धज के जाएंगे, तो ताकि हम उसको अट्रैक्ट कर सके, हम इंप्रेशन जमा सके. लेकिन यहाँ पर तो वाइंड एंड वाटर के सामने इंप्रेशन जमाना ज़रूरी नहीं है. डेट्स वाई नॉट वेरी कलरफुल. बट कलरफुल किस केस में होंगे? इंसेक्ट के केस में. ओके, वहाँ पर तितली आएगी फ्लावर के ऊपर. ओके, द बटरफ्लाई विल कम, बट that's why the flower has to be colorful because of attraction to the that butterfly and animals. Now we will see in our next lecture is outbreeding devices. Okay, so here our pollination is completed. Now we will discuss about outbreeding devices. Okay, so thank you guys. Jai Swaminarayan. See you in next lecture.